आई हैव टू से दिस ट्रूली, मुझे ये किताब भी पढ़नी थी, वक्त नहीं मिलता वक्त नहीं मिलता। मगर मैंने जब ये मेरे घर आए थे मुझे किताब देने, तब मैंने ऐसे ही पन्ने पलटने शुरू किए। मैं सच कह रही हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बुक रीडिंग पर हूँ, मगर मैं रुकना नहीं चाहती थी। इट वॉज सो इंटरेस्टिंग, इट मूव्स वेरी इंटरेस्टिंगली, इट्स रियली अ थ्रिलर एंड अ पेज टर्नर, अ ट्रू पेज टर्नर। जी, आपने कहा कि आप किताबें पढ़ती हैं, कई किताबें आपने पढ़ी होंगी, बायोपिक्स भी पढ़ी हैं? बायोपिक्स, अरे यार मेरी फेवरेट किताबें ना कुछ स्पिरिचुअल टाइप की ज़्यादा है मैं जो पढ़ती हूँ, मैं कुछ ऐसा पढ़ना चाहती हूँ जिससे मेरा माइंड, मेरी नॉलेज ये बढ़े, तो मैं पढ़ती कुछ ज़्यादा वो। Do you have perhaps any plans to come out with an autobiography later in the future, or I mean, have you given it a thought? आई हैव गिवन इट अ थॉट बिकॉज कोई पब्लिशर थे जो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अगर आप करना चाहती हो तो प्लीज़ हमारे साथ करिए, आई वुड बी वेरी रेडी, यू वुडंट हैव टू डू एनीथिंग, आप सिर्फ बोलते जाइए, हम आपको रिकॉर्ड करते जाएंगे एंड देन वन डे वील कंपाइल इट ऑल। एक से हिसाब से मुझे लगता है हाँ इंटरेस्टिंग है, क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं जो आप मेरे बारे में जानते हैं, मगर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कभी कही नहीं। लाइफ हैज़ बिन अ वेरी eventful, I've had a very eventful life. फिर सोचती हूँ अभी नहीं, उसके लिए वक्त चाहिए मुझे। आई रियली लाइक ही वेरी वेरी फोकस कि हाँ ये अब मुझे करना है, इतना फोकस मुझ में अभी नहीं है मैं थोड़ी देर रुकूंगी, मगर किसी दिन आई थिंक यस। If you were to, do you have a title in mind for what your book would be called? I had something loosely in my head. It's a little like, it won't be, क्योंकि ये मेरी फिल्म का टाइटल नहीं है, but a little like कभी खुशी कभी गम. It's got to be the laughter and the tears, because where you've always seen me very chirpy and bright and doing mad things on screen, I've also had a very close experience of life, death, seen it all very closely. So yeah, there's a lot in my life. Someday. Juhi, once Salman said that he does not have the guts to, bear it all in his biography, so he will never write one. Are you very comfortable with sharing, the innermost details of your life, personal, professional? That's also maybe the reason. I think not just yet. I would wait just a little bit more to get, like you said, a little stronger and be a little more brave, and then yes. आपको अगर पूछा जाए कि किसी और एक्ट्रेस को किसी तरह के थ्रेट्स होते हैं किसी भी फिल्म को लेकर, तो Yeah. आप उस चीज़ के बारे में क्या सोचते I'd just say this. I'm not speaking of Padmavati, the film. Very clearly, I'm not speaking of that. It was just about that the threats were to an actress, and I was only just reacting on that, saying that that is not right. उसी हीरोइन को आप दूसरी फिल्मों में आप देखते हैं, आप पीछे उनके पागल हो जाते हैं, आप उन्हें आप उनके पोस्टर चिपका रहे हैं, आप उन्हें इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, और उनको ऐसा थ्रेट करना ये सही मुझे नहीं लगा। At the end of the day, films are made by directors, by the team. You are playing a part. I think just for that reason, I would say a little sensitivity is, and being a little more ज़रा क्या कहूँ, थोड़ा धैर्य रखें लोग, not flare up and say things like that, and that too to a woman. मैम कल आप जयपुर में भी थी, जैसे कि आपने कहा, तो वहाँ के लोगों का क्या मूड है इस फिल्म, वहाँ के लोगों का क्या कहना है, ज़्यादा आक्रोश है फिल्म मेकर लोगों के ऊपर? मैं ऐसे एक्चुअली मैं शादी के मौके पर गई थी, तो आई वॉज अटेंडिंग अ वेडिंग। मेरी मुलाकात राजमाता जी से हुई, एंड देन शी वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट फिल्म्स, एंड जोधा अकबर भी वहीं पर जयपुर में फिल्माई गई है, वो किस तरह से बनी थी। बट देन obviously then some of the talk happened about Padmavati, but then she was just saying something which struck me as something I had not realized.
you're in the movies and you don't realize कि really what कितने लोग आप में से किताबें सच्ची में पढ़ते हैं, कितने लोग हिस्ट्री में इतना ध्यान रखते हैं, मगर फिल्मों को सब लोग देखते हैं. So whatever you show on screen really actually stays in the memory of people, and it can stay for many years. You don't even realize it. So she was just, saying that, something that is, and that's touching history, mythology, that is going to stay with people, as especially आजकल की पीढ़ी के साथ. They are going to connect with this film, and they're going to believe whatever you show them. So, do it very responsibly. That's all. जो क्या आने वाले वक्त में हम आपको किसी फिल्म में देखने वाले हैं, कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? अच्छा, आज सारे क्वेश्चन मुझसे ही करेंगे. किताब इन्होंने लिखी है. बुक रीडिंग इनकी किताब की हो रही थी, गाबी जी, ज्योतिन गोयल जी की, जिनकी मैंने शुरुआत, अपने करियर की शुरुआत इनके साथ जहरीले फिल्म में, ऑलमोस्ट लाइक इन माई इनिशियल ईयर्स आई वर्कड इन जहरीले, हिज फिल्म, and over the years I worked in Safari and another film as well. And you now sang a song for Bird Idol. अरे बाप रे, वो मत याद दिलाइए. बहुत बुरा तरीके से किया था मैंने, बड़ी कोशिश की थी मगर हुआ नहीं ठीक से. But yeah, it's I've had a long association with him. हाँ, मैं एक फिल्म करने वाली हूँ और वो जनवरी में शुरू हो जाएगी उसकी शूटिंग. जनवरी, फरवरी, मार्च तक ख़त्म भी हो जाएगी. सो विनोद चोपड़ा जी की प्रोडक्शन है, एंड और सारे डिटेल्स आप प्रोडक्शन हाउस से ज़रूर पूछ लीजिए. Juhi, I have a question for you, a little fanboy question, but I recently saw pictures of Amitabh Bachchan and Shahrukh Khan together at I think Aradhya's birthday party, and it reminded me, can a Mohabbatein be continued today, like 20 years later, since we're part of the film? Yeah, Do you no, think there is a scope for the film to continue from where it left? That is something you'll have to ask the writer. But personally, I had a wonderful experience, being a part of that movie and working with these two wonderful actors. And there's nothing one can say about them that hasn't been said before. But it's a memory I'll cherish, and if ever there's a continuation of that story, I'll be more than happy to be available for it. Are you directing something, or will you be? Are you working on something? No, not currently, but I would like to. Someday. Thank you. Thank you.